Hello everybody, welcome back to the channel. आमे आउ गोटे थरा with the live sessions especially for you guys. And today we are going to study our 10th class 10th standard second chapter. We have completed the first chapter development, then we are coming to the second chapter sectors of Indian economy. We say setting goal is the first step of turning invisible into visible. What do we say? Setting goal is the first step, very first step of turning invisible. Invisible means what? Which is not visible, which is not legible, into visible. Let's suppose we take your example. You think of getting 95% in your 10th board exam, but the 10th board ka certificate, 10th board mark sheet is till now invisible. It is not visible to you, but it can be visible when you set the goal. It is the first step कि you set the goal. तमे goal set करो यार. We will turn the invisible into visible. आजकल बहुत चलछि ना कि मैनिफेस्टेशन, राइट? आमे मैनिफेस्ट करू तो थ्रू मैनिफेस्टेशन, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करबा ही कोन एनफ. We need to set the goal and work for it, and then the invisible will turn into visible. So let's turn the invisible, your 10th mark sheet, invisible mark sheet into visible mark sheet with the best marks of your life, right? So, in the second chapter, we are going to see sectors of economy re कौन topic हमें पढ़ियो. सेटा देखि दवा. First introduction, then types रे आसे आउथरे आमे तो sector गुडा का देखिबा, किंतु sector रो भी further division अछि. कौन primary, secondary, tertiary. Then historical changes कौन आसिला primary, secondary और tertiary sector रे. Then rising importance of those three sectors. Then creating more employment opportunities. Then आमे primary, secondary, tertiary देखितले, organized, unorganized sector और public and private sector. ये सब गुडा को आमे आगु को जाई की देखिबा, right? ठीक अछि. So the very first thing we do in our classes is introduction. Introduction कौन? In this chapter we would learn the types of classifications of economy. Classification कौन? आमे first देखितले कि आमो economy रे development दरकार, किंतु development विषय जानिबा आगुरु आगे economy को तो जानिबा दरकार ना. तो economy रे आमे कौन देखिबा कि सेटर classification further economy under रे कौन आसुची, कौन आसुची. Primary sector, secondary sector, tertiary sector, organized sector, unorganized sector, public sector and private sectors. These are some of the classifications. Eta gote type, primary, secondary, tertiary. Then other one is organized, unorganized, then public and private. Ei tinta jinso ame dekhiba. To understand this chapter in a better way, try to relate the topics to your daily life. आमे कौन करिबा? आमे try करिबा कि आमे हमरो daily life सहित familiar जिनस जोटा आम सहित अछि ता सहित आमे एटा को relate करिबा, so that you can understand it better. So what are the first three sectors we will see? The first three sectors are primary, secondary and tertiary, right? These are primary, secondary and tertiary. तो primary रो गोटे example अछि एठी agriculture. Agriculture करिया माने चाष करिबा को सेक्टर रे आसे? प्राइमरी सेक्टर रे. Then this one in the secondary sector. Then transportation in the tertiary sector. एटा तीनटा example whenever you are going to write आंकर ए तीनटा sector रे definition ता सहित तमे ए तीनटा picture तम माइंड रे सेते बणी ही आछिबा कथा कि ए गुडा का example रे हमें लिखि परिबा. People are engaged in different economic activities and producing different goods and services, and they are getting an income in return. Obviously, ए तीनटा जाको sector रे गोटे common जिंस कोन? लोक माने वर्क करूचंती.
कहीं वर्क करुछंती टू गेट द इनकम तांको इनकम दरकार बोली से वर्क करुछंती एंड दे आर कमिंग अंडर डिफरेंट सेक्टर्स बस एति की डिफरेंस तांको भितरे कि तांगर सेक्टर्स डिफरेंट तो क्लासिफिकेशन टा किमिति होची हमें देखि देबा फर्स्ट हमें देखिले इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुडा का हमर हमें फर्स्ट नेले इकोनॉमी को इकोनॉमी इन इटसेल्फ गोटे इमिति प्लेस जोटी हमर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमें करू इट इज अ प्लेस वेयर all the economic activities take place, right? Say economic activities को फिर further we are dividing into 3 activities. Primary sector activities, secondary sector activities, tertiary sector activities. Please pardon my handwriting but I hope you understand it. ठीक अच्छे तो ये तीनटा एक्टिविटीज को इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम तीनटा सेक्टर रे कौन कौन डिवाइड कर ले पीएसटी पीएसटी माने कौन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी राइट देन we come to classification of economy ताहले हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जाको हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुडा को डिफरेंशिएट कर ले जो गुडा को डिवाइड कर ले से गुडा करो हमें फर्दर एक्सप्लेनेशन देखिबा फर्स्ट देखिबा हमें प्राइमरी सेक्टर रे कौन होची व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज कीवर्ड देखि दियंतु कीवर्ड कौन रहला इठी नेचुरल रिसोर्सेज when we produce a good by extracting or exploiting the natural resources or extract raw materials from the earth जेतेबेले आमे natural resources through रू raw materials through रू गोटे good produce करू it comes under the economic activity of primary sector जेमते कि agriculture fishing mining ए सब कोथरे आसे जेतु ए सब भीतर गोटे कॉमन जिंस कोन नेचुरल रिसोर्सेस एगुड़ा का आसे प्राइमरी सेक्टर रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडर रे देखो एटी गोटे एग्जांपल देछि कल्टीवेशन ऑफ कॉटन obviously these are natural resources raw material रो एक्सट्रैक्ट होछि देन ए कॉटन रो मे बी हेथे पारे के इथर गोटे शर्ट हबो कि गोटे साड़ी हबो व्हाटएवर तो other names of the primary sector is agricultural sector agricultural ethipai because most of the things most of the goods that we produce are agricultural it comes from agriculture only that is why primary sector is also known as agricultural sector ठीक अछि then economic activities can be classified into 3 sectors और ता भितरु we come to the second sector यानी secondary sector what does secondary sector say secondary sector says that activities involved in the conversion of raw materials into finished goods ये कौन करछंती secondary sector रे हमर raw materials को एट लिख दोछ raw materials को कोथिरे कन्वर्ट करछंती दीटा कीवर्ड कोन हमको मिलला raw materials into finished goods आमे आनिले ओरिजिनली कौन आनले रॉ मटेरियल नहीं के असले बट सेटा को ट्रांसफर कोथि की करले फिनिश्ड गुड को करले फिनिश्ड गुड माने a final good which can be consumed by the consumer it is known as finished good so हमर सेकेंडरी सेक्टर रे मेनली सेटा ही हुए लेट्स सपोज किछटा एग्जांपल आमे नै जिबा जेमति कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मेकिंग कार फोन्स मेकिंग कार्स और फोन्स ए सब कोथरे आसला हमर सेकेंडरी सेक्टर रे आसला जेहेतु आमे गोटे रॉ मटेरियल को लेकी किछटा प्रोसीजर फॉलो करके देन वी मेक अ फाइनल आउटपुट सेटा को आमे सेकेंडरी सेक्टर रे इंक्लूड करूछे एंड अदर नेम फॉर इट इज manufacturing sector then we come to the last sector tertiary sector माने कौन ताहले services and activities which support and help in developing
प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स हमर प्राइमरी आ सेकेंडरी सेक्टर्स को सपोर्ट जोटा करे जो सेक्टरटा सपोर्ट करे तांकू इज नोन एज टर्शियरी सेक्टर. इट इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर. व्हाई सर्विस सेक्टर? बिकॉज तुम इमती भी बुझ परिवा इट इज नोन एज सर्विस सेक्टर बिकॉज it provides services to primary and secondary sector to make further goods, right? गोटे एग्जांपल आम ट्रांसपोर्टेशन हो गला केमती हला. लेट्स सपोज आमे गोटे एग्रीकल्चरल गुड नेले कॉटन नेले कॉटन को लेके फैक्ट्री रे प्रोड्यूस करले ताको आमे शर्ट बनेले बट शर्ट बनेला पारे कोन आम काम सरी जाउची. नो, वी नीड टू ट्रांसपोर्ट इट इनटू डिफरेंट locations, different parts of the country, and it is done by the transportation is done by tertiary sector. So it is aiding the agricultural as well as the secondary sector. Obviously cotton bhi factory jain kimti jaithibo transport he ki jaithibo, right? So the service sector includes some essential services that may not directly help in production of goods. For example, teacher, doctor, those who provide personal services such as washerman, barbers, others. From the above three images we can see the three sectors. तीनटा सेक्टर रे कौन हला हमें देखि पारुछे किंतु टर्शियरी सेक्टर टा गोटे हमको गोटे फाइनल आउटपुट फाइनल गुड एमती देनी एज सच किंतु it is invisible service. Services are कौन? Not tangible, right? They are intangible, invisible. किंतु they play an integral part in the process of the economic activities. Then we compare the three sectors. ठीक है, comparison तो हबा ना, right? So comparison रे कौन आछे? Large number of goods and services are produced by three sectors. Obviously तीनटा जगह सेक्टर पूरा गोटे कंट्री पई कोन हमर प्रोड्यूस करछंती तो obviously large amount of goods are produced every now and then and large number of people are also working in this production process. आउ ए प्रोडक्शन प्रोसेस रे बहुत सारा लोक भी काम करूछंती बट हाउ these are evaluated. एगुडा को evaluate केमती करा जाउछ? To understand everything let us look at the production of a biscuit packet. गोटे एग्जांपल रो बुझ दबा. A farmer cultivates wheat and sells the wheat to a flour mill at 100 per kg. Farmer कौन करछ? Wheat produce करछ and sells to the mill को 100 रुपी पर केजी दोची. देन मिल गले कौन हम ऑब्वियसली से सेटा को ग्राइंड करके देबो. ग्राइंड करके द मिल विल सेल इट टू द कंपनी एट 60 रुपी पर केजी. ठीक अछि, कंपनी X let's suppose तारना. Then the company uses other goods like butter, sugar, milk, flour to make biscuits. हमर ए 60 rupees पर केजी रो फ्लोर यूज करला आउ किछटा अलग अलग जिंस यूज करके से बिस्किट बनै देला, राइट? तो बनेला पारे फाइनली द बिस्किट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर्स एट 30 रुपीस. हला तो सेही मझिरे केते जण ऐड हले? बहुत सारा लोक काम करछनी. गोटे फार्मर काम करछि, आमर कंपनी काम करछि, कंपनी रो वर्कर काम करछनी. वर्कर काम करला पारे बिस्किट तयारी होछि. तयारी हला पारे फिर बिस्किट क्वाड जिवो सेटा ट्रांसपोर्टेशन of which comes under the tertiary sector. The value of biscuit packet includes the price of wheat, grinding prices, price of other ingredients. Obviously जहाँ जहाँ यूज हला से बिस्किट को बनेबा पई सेटा इंक्लूड हुए बिस्किट रो प्राइस भितर. So counting wheat, flour, transportation etc. charges separately would be incorrect because it is already included in the final price. You will see in your further classes कि आमे जिते बेले गोटे जिनस ऑलरेडी इंक्लूड करी देछे हमर इकोनॉमिक प्रोसेस रे जदि आमे आउ थरे सेटा को फाइनल प्रोडक्ट रे काउंट करले सेटा डबल काउंटिंग बोली हुआ जाए. सेथि पई जोटा ऑलरेडी आमे काउंट करी देछे जो व्हीट टाकू आमे एग्रीकल्चरल यूनिट रु माने फार्मर टू ही काउंट करी आछे सेटा को आमे आउ थरे एठी काउंट करबा नहीं. Therefore the value of final good should be taken into account for evaluation. जहाँ final good रो प्राइस आसिला सेटा को ही आमे evaluation रे नबा.
से आमे ए प्रोसेस टा काहे की पढ़िले एटा जानिबा पई कि फाइनल गुड्स गुडा को केमती हुए आउ फाइनल गुड रो प्राइस टा को आमे कंसीडरेशन रे केमती नबा बाय through the example, through the process of calculating the gross domestic product. You will imagine, you will think कि gross domestic product माने कौन था हाले मैम? Gross domestic product माने हैला the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year. Let's suppose agricultural sector रे जितनी की भी production हैला तार जितनी की फाइनल गुड हैला से थिरु जितनी की फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हेले से सब फाइनल गुड्स रो फाइनल वैल्यू टा को जितने हमें ऐड करिबा वी गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर्स इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से सब तीनटा जाक सेक्टर रो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर तीनटा जकर जितने आम फाइनल गुड्स वैल्यू को ऐड करछे वी गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within a country during a particular year and it shows how big the economy is. आमे सेथिरु जानि पारुछे कि केते प्रोडक्शन आमर पर ईयर होची through the final goods and their values आउ सेटा हम इकोनॉमी को किमती इफेक्ट करछि हम इकोनॉमी केते बड़ सेथिरु हमको जाना पड़छि. इन द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी is undertaken by a central government ministry and it takes the help of various government departments of the Indian states and union territories. Obviously GDP calculation is a mammoth task and it cannot be calculated either by me or you, but it requires a lot of people in the process. सेथिपाई it is done by a whole माने अलगा गोटे तापे मिनिस्ट्री पूरा अच्छी. तो तुम बुझी पारला कि हमर फाइनल गुड टाकू आमे काहे की बुझिले फाइनल गुड रो कांसेप्ट टाकू आमे एथिपाई जानिबा इंपोर्टेंट काहे कि ना हम जीडीपी रे जो वैल्यू टा ऐड हुए सेटा फाइनल गुड रो वैल्यू ऐड हुए. लेट्स सपोज कि बिस्किट जदि आमे बनेले हमर बिस्किट गोटे फाइनल गुड तो आमे बिस्किट भितरे आउ थरे हमर व्हीट रो वैल्यू ऐड करबानी कि आमर मिल रो फ्लोर रो वैल्यू ऐड करबा नाही. आमे डायरेक्टली आमर जीडीपी जदि कैलकुलेट करबा सीधा 30 रुपीस टा आमे एज अ फाइनल गुड ऐड करबा. जदि आमे आउ थरे ऐड करले सेटा डबल काउंटिंग हे जिवो. सेही मझरे तम पई गोटे मझ मझरे एमती स्नैक्स खाइबा को इच्छा होय ना तो गोटे स्नैक क्वेश्चन फॉर यू छोटिया एकदम. Which of the following occupations cannot be included in primary sector? या भितर को occupation अच्छी जोटा हमें primary sector रे include करी परिबा नहीं. Agriculture A, agriculture B, fishing, C, mining, D, money lending. What do you think? What is the answer? तमे मते इटा comments रे बतेबा. Next question is agriculture, dairy farming are activities belonging to which of the following sectors? आमे जस्ट आगे गोटे हिंट दे दोची या आगु आमे जस्ट या विषय ही पढ़ुले. ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्शियरी सेक्टर, डी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी. करदला आंसर करदला कमेंट दुईटा जगह रो. सी फर्स्ट आई एम टेलिंग यू फर्स्ट रहबो मनी लेंडिंग, सेकंड रहबो प्राइमरी. ठीक अछि. देन another question, which of the following occupations cannot be included in the tertiary sector? Courier, A, courier, B, basket weaver, C, call center employee, D, transporter. You will answer it in the comment section. Another question is GDP stands for gross domestic product. What does it show? Pick up the correct statement given below. A, it shows how big the economy of a country in a given year in terms of total production. B, it shows what the total product of a country in a given year without counting the country's total resources. C, it shows the number of people involved in
production in a particular year. D, it shows the total value of trade transactions of a country in a particular year. जल्दी जल्दी कह दियो कि कौन हब ए दुईटार आंसर. ठीक अच्छे. 2 I am not telling you, you will tell me on the basis of what we have read till now, right? Then we will see the historical changes. अच्छा चलो आमे देखिले आमर इकोनॉमी रे कौन कौन हला किमती आमर इकोनॉमी तीनटा सेक्टर रे डिवाइड हला. देन तीनटा सेक्टर रे कौन कौन हुए तार एग्जांपल्स कौन तापरे आमे तीनटा जकर एग्जांपल्स देखिकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आसिले तापरे आमे देखिबा कि सेही तीनटा रे किछि वर्ष हला हिस्टोरिकल माने कोन किछि गत वर्ष किछिटा वर्ष हला कौन कौन चेंजेस हेछि. सो the primary sector is one of the most important sector because of abundance of natural resources and more number of workers available. जेहेतु आमर primary sector रे बहुत सारा workers available अछंदी, it is the most abundant sector of the economy. As methods of farming changed in new technology, better irrigation facilities and others, there was more production and prosperity in the agricultural sector. जेहेतु नुआ नुआ technologies आसिला irrigation facilities आसिला ता थ्रू आमर agricultural sector टा आउरी prosper करला, right? आमर agricultural process गुड़ा को आउरी भल से हेई परला. तो सेथि पाई आमर जो इंडिया को आमे जनरली कौन कहू इट इज एन एग्रेरियन कंट्री. एग्रेरियन कंट्री माने मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. सो सेति पई वी सी एठी भी आमे सेटा ही देखुचे कि एग्रीकल्चर इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी. सो दिस लेड टू अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर. एटा जिते बेले हे गला हमर टेक्नोलॉजी जिते बेले चेंज हे गला तो टेक्नोलॉजीया कोन दिन हमर टेक्नोलॉजीया समथिंग सेटा आसिला परे कोन चेंज हला कि प्राइमरी सेक्टर रु सेकेंडरी सेक्टर आसी गले. विथ द कमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. जेहेतु अधिका अधिका फैक्ट्रीज आसिला तो तांको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलला तो रूरल एरिया रु ये अर्बन एरिया को से माने आसी गले. पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज एंड देयर वाज मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एट चीपर रेट. तो जिते जिते आमर प्रोडक्शन अधिका हला तो ऑब्वियसली हमें डिमांड एंड सप्लाई रे कोन पड़छे कि जिते अधिका प्रोड्यूस हे जिबा तार प्राइस टा कमीबा चीपर प्राइस रे हमको प्रोडक्ट गुडा को मिली परिबो. So the question is a short question for you. In the past 100 years, there has been a further shift from dash to dash in developed countries. This has become the most important in terms of total production. को sector को हमारा further development है. From which sector to which sector we have moved? You will tell me. So सेठी हमें देखिले कि historical change कौन हला हमारा agriculture रो secondary sector को हमें आसिले. More services were provided to the other sectors and there are more employment opportunities in tertiary sectors. जिते बेले tertiary sector तापरे हमें तारा importance देखिबा. First हमें देखिले कि secondary sector किमती लोक माने आसिले. Then धीरे धीरे कौन हला जिमती जिमती लोक माने सर्विस प्रोवाइड करले be it to the companies be it to the factories से माने देखिले कि it has a better scope for them. जितने तांको माने को employment मिलला they realize that employment has a better scope than doing agriculture or whatever they did before that in the rural areas. जितने urban areas को असले they came to the conclusion. So it led to the development of basic services such as hospitals, schools, courts, transportation, banks, etc. in a country. These are taken care by the government. जेहेतु अधिका रो अधिका लोको रूरल एरिया रो अर्बन एरिया आसले तो ऑब्वियसली लोक माने रहले से कौन चाहिए कि तांको सुविधा मिलू और सुविधा के प्रोवाइड करे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे. सो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड
facilities like schools, courts, transportation, banks, etc. So, the development of agriculture and industry leads to the development of services such as transportation, trade, etc. etc. So, we come to the conclusion that jitebale agriculture development habo au industry development habo, it leads to development of services as well such as the transportation and trade. So, आमे देखिले कि तीन जन जाक भितर गोटे interconnectedness अच्छी within the primary sector, secondary sector and tertiary sector. So, when the agriculture sector develops, automatically our industrial sector re development हुए, then from the industrial sector service sector re development हुए, and with that we are seeing the rising importance of which sector? Tertiary sector. Tertiary sector सेतिपई अधिका रु अधिका important आम पई ही जाउची, काहेकि ना अधिका रु अधिका लोक माने रूरल एरियाज रु हमरा अर्बन एरिया आछंती आ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खोजुचंती. More services were provided to the other sectors and there are more employment opportunities in tertiary sector. Obviously जिते अधिका लोक आसीबे फैक्ट्रीज कोन चाहिए अधिका रु अधिका प्रोडक्शन हो तांकर, जिते अधिका रु अधिका प्रोडक्शन हबो तांको एम्प्लॉयमेंट भी अधिका मिलिबो. As income level increase, certain sections of people start demanding services like eating out in the restaurants and tourism, shopping, private hospitals and schools. Obviously से employ हेले जित्ती की तांको agriculture through रू मिलुथला या फिर rural area रे जित्ती की तांकर income हे पड़थला ताटू अधिका तांकर income level हेला, तो इनकम लेवल अधिका हेले कोन हबो, ऑब्वियसली लोक माने डिमांड भी अधिका करिवे. केबे आमे जाई कि 5 स्टार होटल रे खाइबू, एस्थेटिक कैफे रे जाई कि मु खाइबी, फोटो उठेबी, आउ शॉपिंग जीबी, गोटे ट्रिप मारिबी संग मानक सहित, ऑब्वियसली पैसा आसले से माने ए सब जिंस डिमांड करिवे. So the services such as information and communication technology have become important, essential and increased since the last few years, and sethipai the communication technology sector which come under the tertiary sector एगुड़ा को अधिका रु अधिका important हे जाउछि हम पई, काहेकि ना people are demanding it जेतु सेटारो तांकु अधिका income मिलुछि. We will see the development through some of the graphs. Let's see this one. ठीक अछि, इटा हमरो timeline हला first graph, first हमरो diagram रो 1973 रो 74, this one. ठीक अछि, the green one is for tertiary sector, the red one is for secondary sector and the blue one is for primary sector. देखो इठी primary sector रे almost 40% people are there, then secondary sector रे we see 10% people, आउ बाकी हमर रहले tertiary sector रे. But 2013 और 14 आडे कोन हलानी देखो, प्राइमरी रे अछंती 10% लोक मात्र, सेकेंडरी रे 20 इंक्रीज हो जाइछंती एज कंपेयर टू दैट, काहे ना हमें पढ़िले ऑलरेडी रूरल सेक्टर रो अर्बन रूरल सोसाइटीज रो अर्बन एरियाज को आसिले और फैक्ट्री रे कोन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पाइले. देन वी सी टर्शियरी सेक्टर हमर केते डेवलप हो जाइछि, almost 70%, right? 70% of the economy now comes under in the 2013 or 14 scenario कहूँ मु 70% of the people इथिरे employed अछंती. Let's तो एटा भी सही सेम जिंस ही कहूँ, right? सही सेम जिंसटा हमें देखिबा को पाउचे कि आघ आमर प्राइमरी सेक्टर रे अधिका लोक एम्प्लॉयड थिले, किंतु धीरे धीरे से माने सेकेंडरी को मूव करले, तापरे से माने टर्शियरी को मूव करले. एंड इन टुडेज सिनेरियो ऑलमोस्ट 2017-18 कथा देछि, टुडेज सिनेरियो मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन टर्शियरी सेक्टर, राइट? एठी भी सही सेम जिनसटा से कहछन्ती कि हमर 2013-14 रे प्राइमरी सेक्टर रे केते जण एम्प्लॉयड थिले, केते परसेंट लोग 12, सेकेंडरी रे 20%, टर्शियरी रे 68%. देन इन 2017-18 प्राइमरी रे
44%, सेकेंडरी 25, टर्शियरी 31. देखो एटा टाइम सहित टर्शियरी रे कमी कहीं गले. लेट्स सी. India is an agricultural land. That is why most of the people work in primary sector. जेहेतु आमे आगुरु भी मु तुमको कहली जोटा कि India is an agrarian country. So most of the people work in primary sector only. We can observe from the chart that in primary sector, while the employment is 44%, the GDP is only 12%. Right? Oh, I am so sorry. This is the share of GDP. एटा हमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल नहीं, दिस इज द शेयर ऑफ जीडीपी जोटा माने एम्प्लॉयड सेक्टर्स रे हमें देखुछे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर केते परसेंट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करूछंती सेटा हमें देखुछे. ठीक अछि, एटा भी शेयर ऑफ जीडीपी राइट. सो वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द चार्ट कि जेहेतु 44% पीपल थिले तापरे 12% हे गले. सी this is 12%, this is 44%. This means that there are more than required people working in this sector, resulting in underemployment. जेहेतु agriculture रे कौन हुए कि there is many times we see the phenomena of disguised unemployment. आमको जना पड़ेनी किंतु से लोक गुड़ाक एक्चुअली अनएम्प्लॉयड थांती कहीं ना there are more people in the work employed than required. जेति कि लोक दरकार अछंती ताठो अधिक लोक माने जेतेबेले सेही कामटा करिवे दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक अछि, तो सेही जिंसटा एठी सेम जिंसटा आमे एठी देखिबा को पाउछे. काहे कि इमति होचे काहे कि ना सेमानक पाखरे करिबा पई आउ किछि काम नाही. राइट. सो जेहेतु तांको पाखरे काम नाही, they have to be engaged in something, so they do the primary activity. Right. तो आमे जदि देखिबा कि जदि तांको मानकु जिमति आमे एग्जांपल रे देखिले टर्शियरी सेक्टर रे आउरी एम्प्लॉयमेंट दिया जाए से माने आसी कि एठी एम्प्लॉयड रहिबे आ सेटा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी रहबेनी, एम्प्लॉयड बोली से माने कहलेबे आमे तांको कहि परिबा कि दे आर एम्प्लॉयड. So employment of people is very necessary. Same जिनसटा एठी आमे देखुछे. जदि गोटे फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स भितरु जदि जेति कि लोक दरकार ताटू अधिका लोक माने काम करूछंती सेटा को आमे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोली कहू. ठीक अछि. एठी गोटे एग्जांपल देइछे हमरो. Now let's imagine 2 of the family members are hired by farmer to work on his land. Since 5 people are not needed to look on that small plot of land, 2 people moving out doesn't affect the production of their farm. In this way they can earn additional income for their family and also secure jobs. Say same example na कि जदि से लोक मानकु जो माने under the shelter of disguised unemployment अच्छंती सेमानकु जदि बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दिया जाऊ से माने काम करि पारिबे आउ से माने बेटर इनकम भी पाई परिबे तांको फैमिलीज को गोटे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मिली पारिबो. अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर रे हुए नि छ माने सेटा बाकी सेक्टर्स रे भी हमको देखिबा को मिले लाइक द कैजुअल वर्कर्स, डेली वेज लेबरर्स, पेंटर्स, प्लम्बर्स, सेलिंग आइटम्स इन कार्ट्स से माने समस्त भितर आमे ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कोठी ना कोठी आमे देखि पारुचे. तांको मान को हेल्प करबा पई व्हाट वी कैन डू इन द इकोनॉमी, वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देम. तांको आमे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देले तांकरा हेल्प हे परिबो. One question for you is, which sector has lost its share in GDP but still continues to be the largest employer? तारा share GDP रे lost ही सरची किंतु still it is the largest employer. सेही जिनसटा आमे एबे डिस्कस करथले. I hope you will answer me correctly. ठीक अछि. Next question is, disguised unemployment occurs when people do not want to work or are working in a lazy manner, are working less than what they are capable of doing, are not paid enough. कौन हम ए भितरु मते कुह. I have like discussed it in very depth, माने in depth मु तुमको बुझेछि. तो I hope you will get it. Then
choose one correct statement from the following. Underemployment occurs when people are not willing to work, when people are working slowly, when people are working less than what they are capable of doing, or when people are not paid enough for their jobs. This is almost similar to that question only. So you can answer any one of them. I will be happy if you answer any one of them. Okay. Then we will see creating more employment opportunities. The same thing I have been repeating ki jehetu we are seeing the phenomena of disguised unemployment in a large scale in our economy. We need to create employment, more and more employment opportunities for the people. Jodi tamaku exam re question ase, you can describe the answer in the same manner. You can take the screenshot. ठीक है. Improving rural infrastructure like road, water supply, telecommunication, ये सब करले कौन होगा? Providing easy, affordable bank loans and better irrigation facilities to the farmers to increase production. एगुड़ा को करले farmer मानू को better facilities मिलियो, तंगर production increase करियो पाई. Promotion of local small scale industries in rural areas. तो जितने आमे लोकल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट करवा, ऑब्वियसली जो लोक माने अंडर एम्प्लॉयड अछंती सिमने आसिके इठी कोन एम्प्लॉयमेंट पाई परिवे. कनेक्टिंग विलेजेस टू द नियर बाय टाउन थ्रू पक्का रोड्स. बहुत सारा विलेजेस रे एबे भी गोटे प्रॉब्लम अछि कि सेमानकर कच्चा रोड अछि, पक्का रोड नाही. तो टाउन को कनेक्ट करले दे कैन गो देयर एंड फाइंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रादर, राइट. The storage facilities of grains and transportation of food crops to the market will generate employment opportunities for many. Then आउ गोटे वे कौन है परिवो कि storage facilities और transportation provide करले भी बहुत सारा लोगों को employment मिली परिवो. जो grains कोड़ा को farmers produce करचुंदी सेटा store है परिवो बहुत सारा time चाहिए. Transportation देले सेटा transport हवा city को जोटी लोक माने सेटा को consume करिवे. आउ तारो जो दरटा तार वैल्यूटा फार्मर मानू को मिल जिवो. A study conducted by Niti Aayog estimates that nearly 20 lakh jobs can be created in education sector alone. जदि हमें try करिबा generate करिबा पई only in education sector हमें 20 lakh jobs माने 20 लाखटा लोक can be employed. Similar jobs can be created in health sector as well. Obviously इत्ते सारा sector अच्छे हमारा ता भितरु हमें को भी sector रे job create करि परिबा. And one of the examples of creating jobs for people is Manrega. What is Manrega? Manrega is an act which is also called Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act by the government of India. जोटरे they provided 100 days of employment to the rural workers. मनरेगा रे कौन करले से? They provided 100 days of employment for every rural worker. ठीक अछि. So we will now compare two situations. काहे की compare करछे एबे बचरिबनी मते आगु को जाई कि you will come to know by your own. ठीक अछि. So here we see Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 AM to 5:30 PM. 9 to 5 job proper madam kar achi. She gets her salary regularly at the end of the month. In addition to salary, she also gets provident fund as per the rules laid down by the government. She also gets medical and other allowances. Kanta doesn't go to office on Sundays. This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and conditions of work. Kanta कौन करे कि कांता पाखरे गोटे 9 to 5 जॉब अच्छी, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट अच्छी, सैलरी तंकु हर मंथ एंड रे सब मंथ एंड रे मिली जाए, तंकु संडेज रे पेड हॉलिडे मिले, एंड शी गेट्स द फैसिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड्स एज वेल. बट देयर इज अनदर सिचुएशन where we see Kamal is Kanta's neighbor. Kamal विषय में देखु छे who is Kanta's neighbor. तो Kamal एठी कोन करछनी? He is a daily wage laborer in a nearby tea stall. से गोटे nearby tea stall रे काम करछंती. He goes to the shop at 7:30 AM in the morning and works till 8 PM in the
evening. He gets no other allowances from apart from his wages. तांको wages छड़ा से आउ किछि allowances पाउ नाहंती जिमिति कांता को provident fund मिलुथला हमको सिमती मिलु नाही. He is paid for the days he is not paid for the days he does not work. So जो दिन काम करू नाहंती he is not getting paid. He has therefore no leave or no paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. तांको सहित कौन हिची कमल और कांतार सिचुएशन रे कांता पाखरे तो गोटे परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट अच्छी किंतु कमल र सिचुएशन रे he has no regular employment. एठी जिमती कि आमे देखिले कि तांको कुछ एम्प्लॉयमेंट लेटर माने आमर इंटिमेशन लेटर भी मिलिनी जोटा कि प्रूफ करतबो कि he has been employed, right? So comparing the two situation, do you observe any difference in the condition of work between Kanta and Kamal? जो differences गुड़ा को तमे देखुचो सेटा कोन? We can say that Kanta works in an organized sector. कांता कोठी काम करछन्ती गोटे ऑर्गेनाइज सेक्टर रे किंतु कमल कोन करछन्ती गोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे काम करछन्ती. ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज रे कोन मैडम जोटा आमे आखरु देखिले ए एग्जांपल थ्रू रो जो जिंस गुडा का तुम बुझुछ सेही सेम जिंस हला ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर विषय रे जहां जहां डिफरेंस तुम भाबी परछ. These are the same differences between organized and unorganized sector. Whatever that is happening to Kanta is happening to an employee of organized sector. Whatever is happening to Kamal is happening to an employee of unorganized sector, right? So the organized and unorganized sector को हमें आसिबा. What is organized sector? What is unorganized sector? An organized sector system of employment with clearly written rules of recruitment, agreement and responsibilities by the government. जहाँ भी तमर recruitment हबा, agreement हबा या फिर तमर resignation हबा कि responsibility हबा सेटा it is the responsibility of government. सेटा it is organized in a way, but an unorganized system of employment which exists merely on verbal communication without any set of rules and regulation. सेटार किछि भी आज्ञा आपनकर एग्रीमेंट नहीं, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स कि तमे केते सैलरी पाइबो तार किछि गारंटी वारंटी किछि नहीं. बस इट इज अ नियर वे ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. तमे आसिला कहला कि मु जॉब करबो चाहूची, मु कहले हां ठीक अछि जॉब करो, दैट इज इट. You come, you serve and you go, right? That comes under unorganized sectors. You have no particular means of like a regular salary or employment. Employment भी तमरा regular माने employment जहाँ तमे employ हबो सेटा भी रेगुलर बेसिस रे नुह तुमको जो सैलरी भी मिलियो ऑब्वियसली जब तुम एम्प्लॉयड ही नुह तुमको सैलरी को बेसिस रे देबे से सो सेटा तार भी किछि रेगुलर बेसिस नाही. किंतु ऑर्गेनाइज सेक्टर रे यू गेट सैलरीज ऑन अ रेगुलर बेसिस. यू आर एम्प्लॉयड, इफ यू आर एम्प्लॉयड ऑन अ रेगुलर बेसिस तुमको तार इंटिमेशन अछि. इफ यू आर नॉट से तार भी इंटिमेशन अछि तुमको. ठीक अछि. सो द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर some of the features we will see. Follow systematic rules and procedures, rules, norms एगुड़ाकर अच्छी. Registers under the government, it get registered under the government. तारा fixed salary अच्छी, fixed working hours अच्छी. Benefits ता छड़ा भी और other benefits are paid leave, paid holidays, gratuity, medical allowances. जहाँ जहाँ हमें देखले जिमती आमरा कांतार फैसिलिटी जहाँ तक मिलुथला से गुड़ाको ऑर्गेनाइज सेक्टर रो आमे फीचर बोली कहि परिबा. किंतु द पूरा अपोजिट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. सेतरे कोन होय? नो सिस्टमैटिक रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स आर फॉलोड. इट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट रो किछि कंट्रोल नहीं. सैलरी फिक्स नहीं. रिस्क ऑफ जॉब इनसिक्योरिटी माने योर जॉब कैन बी gained any time or can be lost any time. Working hours are not fixed. You तमे जेति की भी टाइम काम करिवो तुमको तार पैसा मिलिबो. जदि तमे काम करिवनी you will not get paid. आ सेटा भी फिक्स्ड नहीं कि तमे केते टाइम जाई काम करिवो, राइट?
प्रोटेक्शन किमिति दिया जाऊ अनऑर्गेनाइज सेक्टर रो एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉइज मानकू ऑब्वियसली एज वी सी इमती तो नहीं कि सब लोक मानकू ऑर्गेनाइज सेक्टर रे ही जॉब मिलू बहुत सारा एमती लोक अच्छा जो मैंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर रे भी जॉब करुँच बट तांको सहित तुमको लगुनि कि कोठी ना कोठी टिके भूल होची तो सेटा को आमे किमिति ठीक करि परिबा तांको आमे टिके प्रोटेक्शन एटलीस्ट तो देई परिबा गवर्नमेंट तांको प्रोटेक्शन किमिति दे लेट्स सी सो या फिर किमिति देई परिबो वी विल सी ठीक अछि so we will see some of the ways in which we can give protection to the unorganized sector employees. So government should look into basic details like maximum working hour, leaves, minimum payment, etc. India रे ही नहीं other countries like Korea रे तांकर गोटे रूल अच्छी कि if you are working for 1 hour you should at least get 600 rupees per hour of your work, right? So सेटा गवर्नमेंट को देखिबा दरकार कि लोक मानकर मैक्सिमम वर्किंग आवर केते रहइबो केते की पेमेंट ताको मिलबा दरकार farmers should be supported through adequate facilities of agriculture like seeds, credit, storage, irrigation facilities, etc. farmers माननको भी हेल्प करिबा दरकार safe and healthy working conditions should be provided जेहेतु workers मानकर health भी is one of the most important part, so it should be provided. Casual laborers should be given protection against exploitation by rich landlords and factory owners. Obviously factory owners and rich landlords कौन करती generally जो वर्कर मानको से माने एक्सप्लॉइट करती जति की दरकार ताठू भी अधिका माने जति की से माने एम्प्लॉय हेबा दरकार ताठू भी अधिका वर्किंग आवर्स से मानको काम करबा को कहती so that can be helped by the government. Then small scale industry should be supported for producing raw materials and marketing of their output. जो आमरो big scale industries ही नाहंती एबे छोटो factories ही अछंती से मानको भी टिके incentive देले टिके support करेले government से माने आउरी आगु को बढ़ी परिबे या फिर small scale industries generally आमे try करूछे कि आमे rural areas रे बनेबा ताकि बेसी टू बेसी रूरल लोक मानकू एम्प्लॉयमेंट मिली पारू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दूर ही पारू एंड अनदर वे कुड बी NGOs can aware the laborers about their basic rights by giving them primary education and training. laborers मानकू primary education training ए सब भी दिया जिबा दरकार ताकि से माने जानी परिबे कि तांको सहित ठीक होची कि भूल होची. In most of the cases people are not even aware कि they are being exploited, so they should have the common knowledge at least. ठीक अछि तो these are some of the ways by which we can help the unorganized sector employed peoples, right? तापरे आमे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर देखिले सेथिरो डिफरेंसेस देखिले तारा फीचर्स देखिले तांको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रो एम्प्लॉइज मानक सहित केमिति भूल होची सेटा देखिले तांको केमिति हेल्प करि परिबा सेटा भी देखिले. नाउ वी विल कम टू अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी व्हिच इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आमे देखिबा. This is one of the other classifications. आमे देखले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, organized, unorganized sector. Lastly, we will see public sector and private sector. So, what do you mean by public sector? Public sector माने जोटा publicly available अच्छी. इमे दे बुझ जाओ. The government owns the most of the assets and provides all services. Their main motive is public welfare and then earn profit. किछिटा प्रॉफिट तो से भी पाइबा को चाहउछंती किंतु देयर मेन मोटिव इज से माने किमते लोक मानन को बेसी टू बेसी फैसिलिटीज पहुंची परिबे. किंतु प्राइवेट सेक्टर रे कोन होची ओनरशिप ऑफ द एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑफ द कंपनीज. देयर सोल मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. तांकर सोल मोटिव ही हला कि से किमते प्रॉफिट अर्न करिवे तांको पॉकेट रे जिबा पई. So, in private sector, the assets are owned by the private owners only.
but in public sector they are owned by the government. Some of the examples are railway, post office, they are solely owned by the government only and they come under the services of public sector. But private sector रे कौन आसे हमर टिस्को, रिलायंस वगैरह private sector रे आसे. So contribution of public sector to economic development of India. एबे हमें देखिबा कि public sector, private sector दीटा जिनस तो देखले, but हमर public sector जोटा कि government owned हमर इंडिया रे कौन contribution करिछि, कौन करछि. It promotes rapid economic development through creation and expansion of infrastructure जेमति कि railways हमें देखले, post offices ए सब create करके economic development कराए. Then creates more employment opportunities for the people. Obviously governments only creates the opportunity for people to get employed. Our public sector employment bhi अच्छी. Then it generate financial resources for the development. Obviously financial resources are very important for the process of development. Then it encourages development of small, medium and cottage size industries. कौन भाई important? It encourages the development of small, medium and cottage size industries. आमर जिते की industries अच्छी से गुड़ा को आम divide करिवा small, medium और cottage size रे तो तार development पाई भी आमर public sector help करे. It ensures easy availability of goods at moderate rate. Moderate rate रे आमर भल भल good easy availability easily available कराए goods को. You don't remember the whole sentences. Okay, you just remember some of the keywords and then जोटर तमे तापरे या अंडर रे तमे निजे निजे फॉर्म करि परिबो नोट्स लाइक ठीक अछि पॉइंट्स निजे निजे फॉर्म करबो. It contributes to the human development index via health and educational services. It also provides health and educational services. Obviously the public sector would obviously provide the health and educational services. So health or education मन पकेले, can you remember the concepts we read in development chapter? If you have not studied it till now, तुमको मैं request करिवे कि go and watch the video of development chapter. Then you will come to know कि what is HDI, which is Human Development Index. Then it provides us the basic facilities like hospitals, schools, cheap electricity, fair prices. Yes, we have questions.